So we will discuss today about profit booking, risk management, stop losses, where to put them, how to use them for risk management. And if we get time further, we will also discuss about indices, and we'll see some live charts of what is happening and which indices. You obviously have seen in booklet number 16 that we are very bullish about IT and pharma index, but other than that, what all are other indices which are trying to catch up, we will try to see in the end of the webinar. We'll also try to answer some of the queries that you might have by end of this webinar. So these will be the main topics for today: risk management, stop losses, profit booking, current situation of various indices, and what is the right time to invest. These are some of the topics that we are going to cover today. Now, let us take a hypothetical example. You know that I like to give examples and I like to create stories. So let us create a story related to this example. So if you or me are going to toss a coin one time in the air, then what is the probability of it being a right call? It is 50% probability, right? So 50% chances are that the call will be right, and 50% chances are that the call will be wrong. Thus, the risk increases a lot when I bet big on one call. Okay. Now, for example, there we toss the same coin 100 times. Okay. Without using any logic, we can say by the rules of probability and statistically that there are 50 times, at least 50 times, my call will be right. If I call heads and don't change my call and toss the coin 100 times, the probability is that it will be heads 50 times. So chances of winning the toss for me will be 50%, right? So from this example, what are the plus points that you can deduce, or what are the results that you can or we can deduce from this example? We can deduce that it is high risk to take a big trade on single or less calls. Instead, you should take many calls or many trades with a fixed stop loss. How the stop loss will help you? For example, the probability of winning the toss when I call heads 100 times is 50, right? Similarly, if I am taking around 100 calls, okay, and 100 times, out of 100 times, 50 of my breakout calls will be successful, and 50 breakout calls, for example, fail. Our happy candles ratio of successful breakout calls is quite high, but let us just assume that our success ratio is 50%, okay, like tossing a coin. So now what happens is that 50 times that I'm going to toss a coin and it is going to land heads, or 50% times that I buy a stock and the stock grows or goes ahead, is out of 100 is going to be 50. Say out of 100, my 50 calls fail, but I use the stop loss to limit my losses in those 50 calls, and I let the 50 calls which are correct grow ahead and go ahead. I can very easily deduce that. Hello, did anyone ask a question? We will take the questions later. So 50% chances will be that. Guys, can you all mute, please?
So 50% of the chances that my call being a successful one is, and I letting that call grow, and 50% of chances when my call fails, I stop and limit the loss by a stop loss. So in this case, what is going to happen is my 50 calls which went right keep growing, and where my calls go wrong, I limit those calls by stop loss. This is how I manage the call. This is how I manage the risk involved in trading, or this in short is what we call risk management. Most of the calls that we give, a lot of research goes into that, a lot of hard work goes into that, a lot of fundamental and technical analysis goes into that, and you all have been witness that 70, 80 or more, even 90% of our calls are successful at most of the times, right? So what happens is the calls that fail, you limit them by stop losses, and the calls that go successful, you trail them by stop losses. Now, what is trailing a call by stop loss? So by trailing a call with a stop loss, we mean that, when, for example, I give a Sona BLW share at 500. Now, when the stock becomes 570, you select a support, you select a green line. For example, that green line can be a support of 50 EMA or 200 EMA, or some vertical support or some asymmetrical support, which we have talked in our previous webinars. So you select a support which is below your price and you trail. Whenever we give call, suppose we have given call of Sona, buy Sona BLW at 500. At the initial call itself, we give a stop loss. Say the stop loss is 450. Now, when the call goes to 550 or 600, you should immediately increase your stop loss to 500, your buying price, or just above your buying price. So in whatever case or whatever circumstance, you should not, or you will not make a loss in that call, right? So your risk of capital is covered, your risk of bad investment is covered by making that stop loss. Now, when that price of the stock goes from 600 to 650, you raise that trailing stop loss, which was around 500 to 550 or 575 or 580, based on the horizontal support or the asymmetrical support. There are slanting lines in my chart. There are always some green and red lines in my chart. So whenever the price of the stock grows, you follow the price by increasing your stop loss. We call it trailing stop loss. So you will always find that in a new call, we always give a stop loss. And when the call is a repeat call or a compounding call or a recall, or we base our call on some previous call, at that time we give a trailing stop loss. Say I have given Sona first at 500. Now again, if I say that, okay, it's a fresh breakout and you can buy a Sona at 600 or you can buy a Reliance at 2350. But because I had given Reliance at 1800, so I will trail the stop loss at 1800. When I gave Reliance, the stop loss might be 15. Now say Reliance is 2350. So the stop loss will not be 15. Now the stop loss has to increase with the increase in price. तो नफे में नुकसान हो, कभी ऐसा नहीं हो कि नुकसान पे नुकसान हो. We should always see to it that अपने नफे में नुकसान हो तो चलेगा, नुकसान नहीं होना चाहिए. We should not lose our capital. Protecting the capital is like protecting a wicket in a test match, which I regularly say. When you stay on the pitch in a test match, runs will automatically come. If you lose the wicket, runs don't come. Similarly, if you lose the capital, you are not going to make money. If you protect your capital, there will be n number of
money making opportunities available in the stock market, right? So the best way to manage your risk and make money is by stop losses, limiting your losses by stop losses. When the price of the stock grows or goes ahead, you trail the stop loss. That is, you increase the stop loss. Stop loss should be at a level below the price, the existing price, but above, in most of the cases, of your buying price. Some of the ways to identify the stop loss and book profit we will discuss later in the webinar, where where we will try to understand, based on some formulas that we have derived, where to put the stop loss. Okay. The other way of risk management is by limiting the amount invested in a particular company. So even if some company is a great investment opportunity, what you should do is that you should limit 3 to 4% of your capital only. You should employ 3 to 4% of your capital only in that particular stock, in that particular script. Why so? Because you may not know, Yes Bank was at one time a great company, right, for investment. Kingfisher was a good company. Jet Airways was a good company. You may not know what wrong can happen in some company, some management issues or some government issues or some regulation issues. Satyam was a great company at one point in time. So if I have limited my investment in Satyam by only 3 to 4% and something goes wrong with that company, however great it is, my loss will always be limited. And even that 4%, when I buy, say my portfolio size is, say, for example, 10 lakh, then I will buy only 30 or 40,000 worth Reliance or CAMS or TCS or Infosys or Satyam. Now, for example, a company like Satyam goes bust, then out of 10 lakhs, my only that 30, 40 or 50,000, 40,000 will go, will be lost, and not the whole capital will suffer because of that. And why to make a portfolio of 5 or 8 or 10 companies when there are 25, 30, 40 solid companies available in the market? Say you invest 4% in 25 good companies, that is your 100% of capital. So 4% into 25 companies, 25 good stocks, we are giving you 5, 7, 8 good stocks every night. If you are part of the special group, even in the other group, you get weekly booklets, you get so many newspaper calls in the free group also. You can limit your selection to that those particular calls, and limit your portfolio size maximum can be 100. You can say 1% of 100 companies, but minimum size of your portfolio, minimum it should be around 25 companies, not 5 or 7 or 8 companies, right? So 25 companies into 4% will make 100% of your capital. That should be the minimum size of your portfolio in my particular view. That will help you manage your risk, that will help you protect your capital. And say 4%, if I'm going to buy Reliance or TCS or Infosys or any XYZ company, out of that 4%, all the 4%, I will not buy immediately unless it is a brilliant opportunity, a value buy and a technical breakout and blah, 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 lot of things. What I'm going to do is I am always going to buy in SIP. Say you always, many times you see in my calls, I say X by 2 at this level, X by 2 at that level. That is only for a better risk profiling or risk management. So if I buy at rupees, stock of rupees 100, if I buy X by 2, if it by chance something goes wrong, the market crashes and it forms a bottom at around
say 70, and when it starts its bound, I will get an opportunity to buy it back at 75 or 78 when the upward trajectory is complete. So my average will be somewhere around 85, 18, 85 or 90, right? And I'm sure that in the next bull run, that stock will cross that average. Or when the stock, when I give a call of 100 and it goes to 120, 130, 140, there are always top levels. If it breaks that level, all-time high breakout or 52-week high breakout, or Fibonacci level breakout, then what happens is I have a space to compound it. थोड़ा महंगा खरीदेंगे, but वो stock खरीदेंगे जो आगे बढ़ रहा हो, या वो stock खरीदेंगे जो और momentum में आगे बढ़ रहा हो, right? Instead of averaging a stock that is falling, it is always better to buy a stock which is growing high and going high. The key issue for you will be monitoring your stop loss, and the key issue will be to trail the stop loss. In most of our calls, you will see that when a stock grows, we give some trailing stop losses. Those trailing stop losses that we give are based on the important resistance levels that a stock crosses. So once you are aware of the charts, you will know those resistance levels. If you are not aware of the resistance levels, you can always depend on calls of someone. You can always take a training in technicals, which we regularly provide. So far we have conducted 2 batches of technical training. We have trained around 35, I guess 30 people. And at many times you have seen us post a lot of snapshots from our participants on explaining how they found the training, what is the level of what is the level of inception, and what is the level of their understanding before they did the training and after that they did the technical training with us. So that is always a possibility. And there are, even if you don't, our style is little different. Our way of teaching is a little different. We try and give a lot of examples and lot of less use of jargons. थोड़ा लोग समझ सकें वो भाषा में बात करते हैं. टेक्निकल, हालांकि टेक्निकल सिखाते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स कम यूज करते हुए लेमन टर्म्स में सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग समझ सकें और उसका फायदा उठा सकें. सर, यू हैव अ क्वेश्चन, कमलेश भाई, यू रेज्ड योर हैंड. I think that hand raise was by mistake. So we'll continue. Whenever there is a call which has gone wrong, or whenever there is a call which you have lost on that call, or you have made losses, instead of averaging, you should try to quit that stock if that stock is not going to perform, if that stock has crossed or fallen below some important 50 EMA, 200 EMA levels. It is not worthy, to hold a burning coal in your hand. It will always damage your parts. For us, sir, can you mute? Kamlesh bhai, a lot of sound is coming from your side. Please, can you mute? So, it is important to make money in the stock market. It is not important to make money from a particular stock in stock market, right? Making money is important. I always say, love the money, not the company or the share that you buy. The most important criteria for you should be the money, your hard-earned money. That should be the most critical part. Risk management should be the most critical part. Capital
saving your capital should be the most important part for you rather than making money from that particular stock. नहीं, मैंने ये खरीदा था सुजलॉन या यस बैंक 130 में, अभी 13 हो गया, कभी ना कभी वापस आएगा, तो उसी में से मैं 130 आएगा तब बेच दूंगा. बट व्हाई? When it has fallen to 80 or 90, sell it off. It has gone below critical level, sell it off. और फिर हम उसको वही पैसा किसी और कंपनी में लगा सकते हैं जो ग्रो हो रही हो, जो आगे जा रही हो. एंड यू कैन यूज योर कैपिटल इन अ प्रॉपर वे, डिप्लॉय योर कैपिटल इन the companies which are going and growing ahead rather than keeping on averaging. And you know, यस बैंक एक क्लासिक एग्जांपल है. जिसने 200 पे लिया था उसने 130 पे एवरेज किया, 130 पे लिया था उसने 100 पे एवरेज किया, 70 पे एवरेज किया, एवरेज करते गए और वो स्टॉक नीचे आता गया. आज वो स्टॉक 12, 13, 15 रुपए पे मिल रहा है. तो वो हर एक बार जब आपने उस स्टॉक को एवरेज किया, उस हर बार you contributed to your loss, you contributed to destroying your own capital. So always try to put money where the stock price is growing, not where the stock price is coming down. मैं हमेशा कहता हूं कि don't catch a falling knife, always catch a bouncing ball, right? One मतलब कोई 4 कॉल मैंने लिए, मेरा 25% कैपिटल 4 कंपनी में लगाया और यू नो वो सक्सेस हो गया, तो इट इज मोर लाइक गैम्बलिंग rather than I personally feel that rather than I would like to employ my capital in 70, 80 or 100 companies, and out of that if 70-80% of my calls are successful, that will make me a successful trader. That will be the real test of my trading capabilities or trading capacities. And you know, there are some fantastic 50, 60, 100 companies in Nifty which are continuously growing. So why not take advantage of that bull run in that way? Your minimum portfolio size should not be less than 25 or 30 companies. That helps you in diversification, that helps you in better risk management. Don't use too much buying power in one company or on one particular call. Always take many small calls. Again, following the process is the key. Repeating the same thing will be boring. You know, वही का वही स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते जाना है, वही का वही कंपनी के चार्ट स्टडी करते जाना है, वही का वही प्रोसेस फॉलो करना है. सो इट इज बोरिंग. यस, मेकिंग मनी इज बोरिंग. If you want some excitement, you know, you can always go to Texas. You can always go to a horse race course. You can always play flush with your friends. The investment cycle, investment journey in stock market, investment in stock market for making money is going to be a little boring. You will have to do the same things again and again, follow the same process again and again, follow the same ideas daily, look for the same levels daily, look for the same simple ideas. As I had said in my previous webinars, KISS is the best thing that you can do. Keep it simple and silly. That is the best way to make money in the stock market. कहाँ से आवाज आ रहा है? प्लीज आप म्यूट कर लीजिए. भूपेश जी, या थैंक यू. सो इस तरह से आप आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और बेटर रिस्क मैनेजमेंट आपके कैपिटल का कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू एन एस्पेक्ट, कई लोगों का ये मानना है, कई लोगों का ये कहना है
कि भाई राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट है या नहीं. इफ दिस इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द stock market might fall to 15,500 levels. I will wait for those levels and I will buy when the market is 15,500, or I will buy when the real bull run starts, FII come back and start buying, or I will wait for a crash, systematic crash, and then when everything is available cheap, I will buy. So to know what is going to happen in future, let us turn our clock back. Let us do a little bit of time travel and travel back in time. बैक टू फ्यूचर मूवी देखी है ना आपने, उस तरह से हम कुछ इधर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप देखिए कि अभी हम 2007 के करीब 2007 के करीब या 2008 के टाइम पे हैं, 2008 में हैं, और 2008 में मार्केट 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट से 6140 6138 के करीब पहुंच चुका है. और न्यूज़पेपर्स में वही बात आ रही है कि ओ मार्केट इज ओवर वैल्यूड, अभी क्रैश होने वाला है. ये ऐसी हमने पीई तो कभी देखी नहीं है. द मार्केट इज डेफिनेटली गोइंग टू फॉल अ फ्यू थाउजेंड पॉइंट्स, ये अनप्रेसिडेंटेड है. और फिर क्या होता है आगे? और फिर होता है कि आई एम सॉरी, और फिर क्या होता है? तो और फिर मार्केट क्रैश हो जाता है और 2800 के करीब आ जाता है, 2230 पे एक बॉटम बनाता है. कई लोग बोलते हैं देखा आपने बोला था मार्केट क्रैश होगा, राइट? और मार्केट क्रैश हो गया. यही है स्टॉक मार्केट, इसी को गैम्बलिंग बोलते हैं. लेकिन द पीपल हु स्टेड इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट पोस्ट दैट, तो क्या हुआ? इन 2011 all the losses were recovered, and by 2015 the market reached 9100. now when it reached 9100, आज हम 2015 की साल में हैं, then you will read lot of things in newspaper saying that oh market has reached the peak, it can just not go beyond this, FIIs are now selling, the market is going to crash, this is unprecedented levels. How can Indian stock market Nifty reach the level of 10,000? I mean 5 figures and breach it? Impossible. It is absolutely impossible valuations, absolutely bizarre things are happening. And what happens further? In few years, the market goes to 12,000 points in 2019. In 2019, again we get the same story. Oh, 12,500, 12,400 is an absurd level. Valuations are very high. अब तो मार्केट क्रैश होने वाला है. और फिर मार्केट क्रैश होता भी है. You see the fall in the stock market due to COVID, and from 12,000 levels, the market comes crashing to 8,000 levels. Now further, whatever the doomsday people who were saying this, वो बोल रहे हैं कि हाँ देखा हमने बताया था कि मार्केट तो क्रैश होगा, और मार्केट क्रैश हो गया, देखा अब सही वैल्यूएशन है. दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट शुड बी, दिस इज वेयर द स्टॉक मार्केट शुड बी. बट व्हाट हैपेंस इन 1 ईयर? द मार्केट रीचेस 18,600 levels. तो पीक टू पीक, पीक टू पीक, पीक टू पीक, द मार्केट कीप्स ग्रोइंग. एंड व्हाट सीम्ड टू बी a peak over here in 12,000 in 2019 is surpassed by 30-40% now, and we have a new peak of 18,600. What seemed like a peak of 9,000 in 2015 is way beyond us. What seemed to be a peak in 2008 of 6,000 is also way beyond us. तो हर पीक पे हमको यही लगा है और यही लगता है कि बस यही अंत है और इसके आगे मार्केट का कोई भविष्य नहीं है. बट मार्केट कीप्स थ्रोइंग सरप्राइजेस टू अस एंड कीप्स ग्रोइंग एंड कीप्स मूविंग फॉरवर्ड. वी हैव मेड अ न्यू टॉप इन 2021 of 18,600, and now again, like these previous peaks, people
आर सेइंग दैट ओ वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया, पी बहुत हाई हो गया, एफआईआई चले गए और अब मार्केट क्रैश होने वाला है. So now you guys can unmute and tell me if this is the right time to invest in the market, or in few years time we are going to see a new peak at around 22,000, yeah 23,000, yeah 28,000 in 3-4 years time. The Indian market is a continuous bull market. India is a continuous growth story. Only big, massive, major crisis like subprime crisis or COVID-19 have been only able to stop Indian market momentarily, but the march of Indian market continues in a positive direction. So the right time to, this brings us to one of our question, that right time to invest in the stock market is today. As I said, you can do SIP investment. Don't go full fledged. पूरा 4% मत खरीद लो एक बार में. Buy in SIP 1.5 to 2%, and then keep that. अगर मुझे 50,000 रिलायंस में डालना है तो मैं 25,000 डालूं अभी, या तो थोड़ा एक लेवल क्रॉस करने के बाद और 25,000 खरीदूंगा, 2 शेयर कम खरीदूंगा, या तो फिर नीचे जब एक बॉटम बना दे, अगर बाय चांस क्रैश होता है तो नीचे बॉटम बना दे, बॉटम बना के जब बाउंस हो रहा हो उस टाइम पे बाकी के 25,000 से खरीद के एवरेज करूंगा. सो दिस इज द वे टू go in the market, this is the way to grow in the market, and the right time to invest in the stock market is always today. You can always continue to reinvest, to add, to average and to compound in the market. बट जब तक आप वो स्विमिंग पूल में पहला जंप नहीं मारोगे तब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगा. Now let us have a look at some of the numbers. अभी दिसंबर के नंबर तो आना बाकी हैं, बट नवंबर तक के जो जीएसटी नंबर्स थे, what they show is that the market has recovered big time. Yes, Omicron is an issue. Omicron rates मुझे जहां तक लगता है they are quite a bit discounted in the current prices, but mostly it looks like the market march is going to continue. ये मेरे ख्याल से छठा या ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 छठा या 7वां महीना है जब 1 लाख करोड़ के ऊपर जीएसटी कलेक्ट हुआ है. इट टेल्स मी द स्टोरी दैट इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल. If you look at the July to September quarter GDP of the leading countries of the world, तो आप देख सकते हैं इंडिया कहां पे है, राइट. India, Romania is at 8, UK is at 6, Saudi Arabia 6.2, Japan at 1.3, Germany 2.5. So who is racing ahead in the pack of bulls is India. And definitely वो FII करते रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट इंडियन बुल मार्केट का जो स्टोरी है that is going to grow and go ahead. Yes, in the times when there is lot of volatility, in the times that there is uncertainty के ओमिक्रॉन आएगा तो क्या होगा, या बजट कैसा होगा, in those times be a little circumspect. आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे A+ कैटेगरी के स्टॉक खरीदो या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के स्टॉक खरीदो जिसके फंडामेंटल्स में आपका विश्वास बहुत है. फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज at good technical buying levels, at breakout levels, and you can see your capital grow or soar ahead even in the worst of the markets. एवरेज करने का मौका मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा मार्केट तो जब बाउंस करे उस टाइम पे बॉटम बना के बाउंस करे तब एवरेज करने का मौका मिलेगा. डोंट डिप्लॉय ऑल योर कैपिटल एट वन टाइम. आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा तो आप एवरेज क्या करेंगे, राइट. सो ऑलवेज हैविंग कैश इन योर हैंड इज अ पोजीशन. कैश इज ऑलवेज अ पोजीशन. ऐसा मत समझो कि यार ये कैश है तो उसको मैं हाथ में रख के क्या करूं, बट वो कभी ना कभी आपको
मार्केट में या कोई ना कोई स्टॉक, कोई ना कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एवरेज करने में। समझो मैंने बजाज ऑटो लेके रखा है, जो मेरे बाइंग लेवल है उससे काफी नीचे, 25-30% नीचे, हीरो होंडा काफी नीचे है, ब्रिटानिया काफी नीचे है, तो आई विल बाय विद द हेल्प ऑफ दैट कैश ब्रिटानिया और हीरो होंडा और बजाज ऑटो, जो फंडामेंटली स्टॉक अच्छी कंपनियां हैं, व्हेन दे विल फॉल, और कैम्स फॉर दैट मैटर, जो फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं, जब बॉटम बना देंगी, बॉटम बना के बाउंस करेंगी, उस टाइम पे मैं वो कैपिटल जो मैंने एज कैश रखा है, कैश इज ऑल्सो अ पोजिशन, उसको यूज करूंगा. सो इंडियन ग्रोथ स्टोरी, इंडियन इकोनॉमी, एज यू गाइस कैन सी. नाउ कमिंग बैक टू प्रॉफिट बुकिंग, जो हमारा मेन सब्जेक्ट था, कि मार्केट 18,000 से 16,000, 16,500 आ गया. बहुत सारे स्टॉक, जैसे कि ये अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कैम्स, ये 4,000 से 2,600 पे आज आ गया है, राइट. तो प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें? जब 4,000 पे था और एक लेवल, एक स्टॉप लॉस ये ब्रेक करता है, तो उस टाइम पे आई शुड हैव एग्जिटेड कैम्स. तो मेरे समझो कि 4,000 पे मैं एग्जिट नहीं कर पाया. नो बडी नोज द एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम, किसी को पता नहीं है, ये हम सब जानते हैं. तो हम लोग व्हाई डोंट वी ट्राई टू मेक और फिक्स अ लेवल बिलो विच यू विल सेल. आपने वैसे फॉर एग्जांपल समझो कैम्स 1,300-1,400 पे आपने पहली बार दिया था, तो वहां पे खरीदा है, 1,300 से 4,000 हो गया, तो अभी 500-600 रुपए मुझे मार्केट में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको 3,500 पे बेच सकता हूं. 4,000 पे क्यों नहीं बेचूंगा? क्योंकि पता नहीं है, 4,000 इधर दिख रहा है, इससे आगे 6,000 भी जा सकता था, 8,000 भी जा सकता था. तो आई डोंट नो व्हाट द पीक इज, बट प्रॉफिट बुकिंग का एक पॉइंट हम लोग लेट अस ट्राई टू स्टडी. अब इस चार्ट में, जो यहाँ पे ये चार्ट है, द चार्ट दैट यू आर सीइंग हियर राइट नाउ, I have added 2 daily SMAs. The blue line is 10 SMA, simple moving average, and the yellow line that you can see here is the 20 SMA. So as per Happy Candles research, most of the times, again, most of the times, when, not all times, but most of the times, when this blue line crosses the yellow line and goes down, then what happens is that the price sees a substantial 7 to 20 or 30% downfall. You see, मैंने 4,000 पे, मुझको पता नहीं है कि ये टॉप है, तो मैंने समझो I did not sell CAMS at 4,000. But when the 10 SMA and 20 SMA crossover happens over here, and the blue line comes below red line, blue line comes below yellow line, if I would have sold at 36 or 3,700, this might be 30, between this 3,600, then what happens is I would have lost 400 rupees, but anyway I have bought CAMS at 1,300, so giving back 400 rupees to the market, still I will make substantial 2x or 3x money. And again, with this money which I have booked, I will hold it as cash in the, समझो I want to buy CAMS only with that money. या मुझे रिलायंस का शेयर बेचना नहीं है या CAMS बेचना नहीं है, तो मैं उसका कैश में पोजीशन बना के रखूंगा. और when it forms a bottom somewhere over here and it starts bouncing, at that time I will be able to, समझो मेरे पास 100 CAMS है, तो एक टाइम के बाद मेरे पास 110 CAMS होंगे. जब वो बॉटम बना के बाउंस कर रहा होगा, तब मैं खरीद लूंगा वो फिर से कैम्स. तो उसी कैपिटल में, इन द सेम कैपिटल, आई विल बी एबल टू बाय मोर कैम्स. Got my point? You can look at this red line, this blue line, yellow line, green line and red line. Green and red line are mother and father lines, right? So now I am introducing 2 new characters to you to understand this story. Suppose you are living in a housing society. Now every housing society will have a character who is a dada, will have a character which is a notorious guy. For example, you become enemy with that notorious guy, या वो जो गुंडा है, गली का गुंडा जिसको बोलते हैं, उससे आपकी दुश्मनी हो गई.
कोई बात नहीं, चलो आपको इतना ज्यादा नुकसान वो नहीं कर पाएगा। बट नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वो गली के गुंडे के साथ आपकी कॉर्पोरेटर से भी दुश्मनी हो गई वो एरिया के। नाउ व्हाट विल हैपन, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकता है। नाउ कॉर्पोरेटर के बाद आपकी एमएलए से भी दुश्मनी हो गई। नाउ द लोकल एमएलए इज आल्सो योर एनिमी। नाउ व्हाट हैपेंस, you are in a big trouble. And after local MLA, for example, member of parliament of that area is also against you, उससे भी आपकी दुश्मनी हो गई, तो फिर you are going to be in trouble. So when the price of the company comes below 10 SMA, be careful and watchful that something wrong can happen to this stock. When it comes below 20 SMA, local gunda plus corporator, both are your enemies, you are already in trouble. So exactly at this point you should exit. But local gunda, corporator and MLA are your enemies now. Then at least exit at this point. Then now there is no point in holding on to the burning coal. It will only burn your palm. Okay. And for example, everybody in the world, MLA, MP, corporator and the local gunda are your enemies. Then it is waste of time to hold on to this stock, unless it is very, this guy has told, okay, I will talk to these three and sort out your problem, you hang on over here, then it is. But if it goes further below, I will sell this stock, whatever good stock that may be. So 10 SMA is local gully gunda, buy. Yellow line is the corporator. Green line over here is the MLA and red line is the MP. So you decide if your stock is fundamentally strong. Mukesh Ambani will not go out of Antilla or not run away from Antilla, even if Home Minister of Maharashtra, just nothing to do with politics, just an example. Even if that fellow goes against him, because he's a strong guy, fundamentally strong, right? But if you and me are enemies of these corporators and this, gali ka gunda guys, then we are in trouble. So fundamentally, not so strong companies, you are able to make money. 10 SMA is broken, book your profit or book partial profit at least. 20 SMA is broken, exit. Fundamentally strong companies, you can wait for them to even, it can turn around from here. Local gunda and corporator may be their enemy, but MLA, you will be fundamentally strong guy, you will find the support in MLA and then it can bounce from here. But again, MLA is also an enemy, then you guys are in trouble. And now MP is also enemy here. Let us look at some other example. This is Nucleus Software. First, it was having great panga with local gully gunda. Then it took panga with the corporator also. Blue line came under yellow line. So now it is in trouble. Then it punched the local MLA also here. Local MLA gave it a gap down opening. And now it started having panga with the member of parliament also. Okay. So now will you buy this stock at this level? No, only if it now comes above 1, 2, 3, 4 levels, which it might come shortly. Then only then, once it is again friends with these guys, then you can buy this stock. So fundamentally, again, blue line coming under red line. Look at the correction that happened from 720, from 765. It is now around almost X by 2, 478 or X by 30-35% correction. Blue line coming below yellow line. Okay. Remember these 4 lines as local gunda, corporator gunda, MLA and MP. Okay. Don't take panga with these guys. If you have taken panga, take position accordingly and exit accordingly. No, don't judge me about this. Just an example, nothing to do with any politics or anything. It is just take this with a pinch of salt as an example.
Again, look at another very good company, one of my favorites, one of fundamentally strong companies, PI Industries. What happens over here? Fight with the blue line, a big candle, fight with yellow line also, fight with green line, but it is holding on. Somehow it is trying to negotiate Mandavli with the local MLA, but then that Mandavli position fails and see what happens. 2,700 from 3,500 to 2,700. Now the stock is again making friends with the MP. It found some support from member of parliament. Then member of parliament helped it reconcile with the local Galigunda corporator and MLA. And now this stock is again looking strong, and it can go up to the previous peaks. It is a fundamentally strong company. So fundamentally strong company will always find a support somewhere, and it will bounce from there. Okay, so profit booking can be done when these supports are broken. Okay, depending on your entry, depending on the fundamental strength of the company, you can decide where to exit. 10 SMA, 20 SMA, 50 EMA, and 200 EMA. These are 4 points. 10 SMA again, 20 SMA, 50 EMA. Now 50 and 200, we are keeping only EMAs. You know the reason, mother and father, right? So 50 EMA and 200 EMA are always the biggest supports and biggest resistances. Now I introduce two more guys in the equation. The local, your society secretary, and the corporator. These are the two new characters in our daily soap opera of Happy Candles investment. So earlier, mother and father were there. Now you get two more guys, which are very important for profit booking. Okay, 10 SMA and 20 SMA or DMA, daily moving average, simple moving average, right? So this is PI Industry. Let us have a look at another example. Advanced Enzyme made a peak at 504. Panga with local guy at around 458. Panga with corporator. Panga with your local MLA. It was trying to negotiate with the local MLA. That negotiation failed. And then it tried to take support at 200 EMA. It took support at 200 EMA, but these three guys were able to convince the member of parliament that no, this guy is wrong. So now where did it reach? From 500 to 300. Excellent company. Advanced Enzyme, I hold it in my portfolio, but I had booked some profit around this level, somewhere around this level. So I am okay if I have booked 50% or 60% profit at that level, right? Lot of my cost is covered, lot of my investment is covered. Almost the price of Advanced Enzyme in my portfolio is close to zero because I have booked a lot of profit over here. So in that case, I don't mind if it fights with anyone over here. But I can average it back if I have not sold. I can average it back when it crosses this red level again and it becomes bullish. So you see this 10 SMA coming under 20 SMA should be a big alarm, should send a big alarm bell in your head for profit booking. Got it, guys? So this is how, these are some of the levels that you can use for profit booking. You know what to call these 4 lines in your chart. Similarly, another fantastic stock, Reliance Industries, the biggest. What happens when the blue line comes under red line around 2596? It crashes to below 2300. So this is an important crossing point. Blue line coming under yellow line, but blue, yellow, and green line, everything gone, is a big point where you should book some profits. Book say 25% profit here.
book 50% profit if this crossover happens, another 25% here, and then you have this 75% in your hand. So when it bounces from here, you can use that money to acquire more Reliance at a better price. Okay. For example, you had 100 Reliance over here. When it bounces from here and you have booked profit at appropriate level, then you will have 110 Reliance in the same money. There is no harm in increasing the quantity if it is possible. There is no harm in maximizing the use of capital. Or when it goes here, you can find some other stock which is breaking out, and you can use that money for the fantastic purpose of using that money, letting that money to grow with some other breakout. Anyway, this guy is going down. Use that money for some particular time to grow with some other guy. And then when again there is a selling off level, you can see that, okay, either खरीदने जैसा हुआ है, उधर by chance बेचने जैसा हुआ है, re-enter Reliance. Nobody is telling you to not have Reliance in your portfolio, but you can always increase and decrease quantity based on the technical levels that you can see here. So I hope you guys are, it was a good session for you. I introduced two new characters to you today in your investment journey, the blue and the yellow line. And if you guys want, or if you guys wish, we can have not much time left. I think only 6 or 7 minutes are left, but we can have a quick look at some of the indices or some of the stocks that you would want me to look at. You guys can unmute and let me know if you want us to look at some of the stocks. Are you guys not able to unmute? You can use the chat box. Or maybe there is some issue with unmuting. Hi guys, can you hear me? Are you able to unmute yourself? Yeah, okay. You have any other questions regarding the things that we discussed, or regarding some stock that is there in your mind? We have 5-6 minutes where we can take the questions. I think there are no questions today. So we will try to end this webinar over here. I think either you understood everything, or most of the things went bizarrely over your head. So mostly I think the things were very clear to you. And mostly, yes, there is a question that are you recording this webinar? Yes, I am recording this webinar. And maybe I'll post it on the YouTube, on our YouTube channel. You all guys know about the services that we give at Happy Candles. Many of you are part of the special group. You know, you can avail the services of special group at 500 rupees a month, or it is free of charge if you open account with us, account with our franchise in Happy Candles, or you can pay a 3-month installment of 1500 and you can become a member. You can also become a member of the special group by paying yearly fees of 6,000 and you will get a couple of months free. It is an educational group where we keep on teaching this kind of educational ideas, where we keep on giving some ideas for paper trading and for some tips on trading and paper trading and educational tips. Hello sir, Darshana is here. Yeah, Darshana ji, namaste, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर. ये जो अभी आपने समझाया concept is very clear, but just मुझे ये पूछना था कि the local Gunda is what days you are considering? 10 SMA, 10 SMA, 10 SMA या DMA?
येलो लाइन इज द 20 SMA या 20 DMA. 20 SMA और DMA. Okay. And the blue line is 10 SMA. ब्लू लाइन वाज 10 SMA. आप चार्ट में आप खुद अपना कुछ भी नंबर दे सकते हैं या कुछ भी वो कर सकते हैं, ब्लू रेड ग्रीन जो भी नंबर दे. बट अभी जो हमने चार्ट देखे उसमें ब्लू लाइन वाज 10 SMA एंड येलो लाइन वाज 20 SMA. 20 SMA. ओके. मैं देख रही थी 10, 50 एंड 26. सो मुझे लगा कि कुछ और ऐड करना चाहिए या नहीं. नहीं, it is purely up to you how you take it. For me, as I said, for those who I mean you have also seen, for me the 4 lines that are most important, 2 lines are 50 EMA and 200 EMA. और उसके अलावा क्योंकि मेरे हर एक चार्ट में 50 EMA और 200 EMA का ग्रीन और रेड लाइन होता ही है, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़े सपोर्ट और सबसे बड़े रेजिस्टेंस है कोई भी चार्ट, कोई भी शेयर के लिए. उसके बाद आज 2 नए कैरेक्टर हमने हमारे एकता कपूर की सीरियल में ऐड किए हैं. थैंक यू. नो प्रॉब्लम दर्शना. बाय. विशाल जी, Yes. एक क्वेश्चन है. अभी आपने जो डाउन गोइंग ग्राफ दिखा है, मतलब 10, 20, 50 एंड 100, वैसे ही सेम अप गोइंग ग्राफ में कोई एग्जांपल बता सकते हैं? अप गोइंग ग्राफ में ये सेम ही हम देख लेते हैं सर. सेम चीज हम देख लें. PI इंडस्ट्रीज का क्या हो रहा है देखें. Look what is happening in PI Industries now. अभी PI Industries का, सॉरी एडवांस एंजाइम आ गया, ये PI Industries का इधर मांडवला ये हो गया है सबके साथ. Now it is friend with 200 EMA. It is above 200 EMA. It is above 50 EMA today, and it is also above 10 SMA and 20 SMA. So now ये स्टॉक में क्या करना चाहिए, एक छोटा सा इधर रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 3048 और ये इधर एक 3060 के करीब. So once it crosses 3048, 3060, it will be the right time to enter. या फिर I will tell you to take X/2 entry in PI Industries tonight. आज रात को एक कॉल आप देखेंगे स्पेशल ग्रुप में कि भाई 200 आप X/2 एंट्री आप 3000 पे ले लो, और X/2 एंट्री when it crosses. Pardon? X/2 का फंडा समझा नहीं मुझे. हाँ, X/2 मतलब समझो आपको PI इंडस्ट्रीज में 10,000 रुपए का PI या 1 लाख रुपए का PI इंडस्ट्रीज लेना है, तो X/2 का फंडा ये है कि आप 50,000 का PI इंडस्ट्रीज इधर ले लो, और 50,000 रुपए का PI इंडस्ट्रीज बाय चांस अगर ये नीचे जाता है तो उसका सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, उस टाइम पे ले सकते हैं. या फिर ये 50% जब ये 2 रेजिस्टेंस इधर दिख रहा है ना 3060 का, वो क्रॉस करे तब बाकी का 50% ले सकते हैं. इफ यू आर नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है अभी कि ये रेड लाइन रेजिस्टेंस है, इधर इसको टच करके कई बार वापिस आ चुका है. ये देखो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, तो मुझे मालूम नहीं है कि अभी कल ये इसको टच करेगा तो क्या होगा. ऊपर भी जा सकता है तोड़ के, नीचे भी आ सकता है. एक बार तो इसको ऊपर तोड़ के गया था फिर भी नीचे आ गया. ये देखो इधर बराबर 8-10 दिन पहले. तो मैं जब श्योर नहीं हूं. पार्डन? 3048 लेवल उसने क्रॉस किया था, तो उस टाइम पे बाइंग करना चाहिए, उसके बाद तो फिर नीचे आ जाए जो रेजिस्टेंस. हाँ, ये तो हो सकता है ना सर. हर एक ब्रेकआउट तो सक्सेसफुल नहीं होगा. मैं वही बोला ना, हर एक ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होगा. तो बाय चांस किसी ने 3400 लेवल पे बाय किया है और वो प्राइस नीचे आ गया, तो अब इधर से जब सपोर्ट बॉटम बना के बाउंस करता है, मैं बोलता हूं ना कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, कैच अ बाउंसिंग बॉल. ये तो चांसेस ऑफ अ ब्रेकआउट फेलियर विल ऑलवेज बी देयर इन स्टॉक मार्केट. ब्रेकआउट तो फेल हो सकता है सर. ये इधर आज ब्रेकआउट दिया है, ये जरूरी नहीं है कि 3050 या 3060 कल क्रॉस कर ही लेगा. मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, स्टैटिस्टिक्स का गेम है. तो आप क्या कर सकते हैं कि X/2 एंट्री ले लीजिए इधर. अगर ये क्रॉस करता है तो ये जब इसने रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया समझो 3060 का, आगे सीधा रेजिस्टेंस को 3300 3400 पे मिलने वाला है.
तो x/2 एंट्री तब ले लीजिए, 50 रुपए और महंगा खरीदना। या फिर आप x/2 इधर ले लीजिए, अभी नेक्स्ट टाइम ये 3400 क्रॉस करे उस टाइम पे x/2 लेना, राइट। तो इसीलिए x/2 एंट्री आपको हेल्प करता है। अपराइजिंग में है तभी लेने का है। यस, नेवर, जब गिर रहा हो तब कभी नहीं लेने का। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। एक चाकू गिर रहा है हाइट पे से, तो आप खुली हथेली से उसको थोड़ी पकड़ोगे, आपके हथेली में छेद कर देगा ना, वो आपको इंजर्ड कर देगा। सो नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, कैच अ बाउंसिंग बॉल। एक टेनिस बॉल जब नीचे बॉटम बना के बाउंस हो रहा है उस टाइम पे उसको कैच करो। सर और एक एग्जांपल IEX का बता सकते हैं? IEX, ओके। IEX एक अच्छा शेयर है, मैंने 1-2 दिन पहले ही हाँ सर, उसको, आपने वो जो 15-20 शेयर दिए थे ना आपने, वो उसमें हाँ IEX ऊपर गया, मतलब ऑलमोस्ट अभी ऊपर गया है, एक टाटा कॉफी छोड़ के। ओके, टाटा कॉफी छोड़ के, अच्छा आज मतलब नीचे गया ना टाटा कॉफी। सर ये तो वो लॉन्ग टर्म शेयर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया है। एक दिन के ऊपर नीचे जाने से थोड़ी कुछ होता है सर। मेरे जो मैक्सिमम एजुकेशनल कॉल्स हैं वो है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो अभी मैं सर ये नहीं कर पा रहा हूँ कोई रीजन की वजह से। सिलेक्ट एप्लीकेशन विंडो, it is not allowing me. Yeah, you guys can see the chart. हेलो, नहीं दिख रहा सर। ओके, मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अभी दिख रहा है चार्ट? यस सर। ओके ओके, यस। so now I am going to remove this DMA और इसको देखते हैं। तो इसने बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट, एक तो ये चैनल बॉटम में है मेरे ख्याल से, और इसने अच्छा सपोर्ट लिया है अबाउ 50 EMA। तो एक बार जब ये 259 लेवल अगर क्रॉस कर लेता है ना, then it looks like that it will go up to 266 level. If it crosses 266, it can go to 279 level. Or one point that can be a major resistance will be around this place, this place. ये 292 इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनने वाला है आगे की जर्नी में। So from here it can go to 279, 266 और 292। बट लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी स्टोरी है। लॉन्ग टर्म तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। इट इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक, इट इज पार्ट ऑफ माय पर्सनल पोर्टफोलियो। बट पर्सनल पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं है कि जब नीचे जाने लगे तो हम इसको पकड़ के ही रखें, नीचे जाने लगे तो हम उसको पकड़ के रखें। कोई एक लेवल आपको तय करना होगा स्टॉप लॉस, जिसके नीचे जाए, वैसे भी आप काफी प्रॉफिट में बैठे हैं, तो जिसके नीचे जाए तो यू कैन बुक द प्रॉफिट। Okay, sir. Any other stocks that you want to, anyone wants to know before we close the meeting for the day? सर एक BSE देखेंगे, BSE लिमिटेड। सर जो घबराने वाले स्टॉक ही नहीं है उसको आप देखने को बोल रहे हो। मैं 50 बार अपने ग्रुप में भी बताता हूँ। आज 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 का थोड़ा ये कैंडल अच्छा भी था और एक तरीके से इतना अच्छा नहीं था सर, क्योंकि ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस से लौट रहा है, ये एक यहां से ये टच होके ये वापिस आया है। तो एक इसमें अगर आपको नई एंट्री के लिए आप देख रहे हैं या आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए देख रहे हैं, किस लिए आपको देखना है ये? सर एंट्री के लिए, नया एंट्री, न्यू एंट्री।
एंट्री के लिए ये इधर सही जगह था 1800 के करीब। अभी उसको सर आप पार करने दो 2100 तब लेना। ओके या ये ऐसे स्टॉक है जिसमें आप सिप एंट्री करो, मतलब एक दो 1 और 2 स्टॉक्स यू कैन कीप बाइंग एवरी मंथ। 1 और 2 स्टॉक्स आप समझो आपको 25,000 रुपया या 50,000 रुपया बीएससी में डालना है, तो एक स्टॉक हर महीने खरीदते रहो, तो आपका प्राइस एक एवरेज हो जाएगा 1 साल का, राइट। एंड पोर्टफोलियो स्टॉक है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। या तो आप छोटी सी क्वांटिटी अभी ट्रैकिंग क्वांटिटी खरीद लीजिए, थोड़ा बहुत आप ऐड करना ये 2033 लेवल के ऊपर। वैसे राइट टाइम था ये एक्चुअली अराउंड 14-1300, जहां पे ये 50 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ रहा था। बट कोई बात नहीं, या तो आप सिप में छोटी छोटी क्वांटिटी हर मंथ यू कैन बाय स्मॉल क्वांटिटी एवरी मंथ, or you can buy when it crosses 2100 level, it will definitely go to 22,229 level. So these are the levels where you can take a fresh entry in BSE. हर एक लेवल क्रॉस करे तो आप x/4 एंट्री ले लो, और when it crosses each level you keep increasing your 25%. या फिर जब कुछ मार्केट क्रैश होता है और ये जब ग्रीन लाइन या रेड लाइन के पास आपको मिल जाए, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा। ओके सर। ओके, अभी ये ग्रीन लाइन के बहुत पास था, वो एक अच्छा पॉइंट था। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? टाटा एलेक्सी। पार्डन? टाटा एलेक्सी। Tata. Again, not to worry, it's a long-term portfolio stock, but yes, right now it is below a critical support level. Okay, this you see this line, it is below this line, so that is bad. But 5278 is the level, Rama. महेश भाई आपका काफी आवाज आ रहा है। 5278 should be your profit booking levels. I think it is forming a bottom over here and it is trying to rise. Okay, fresh entry can be taken only above 5791 now. Let it form a bottom. It looks like forming a bottom over here. And when it has given a green candle over here, one more green candle, and once it crosses this line, the cyan color line, तो फिर आप उसमें entry ले सकते हैं, और for safety purpose let it cross the 50 EMA and then you can take entry. This looks like a resistance over here. Yeah, I entered at 61. You entered at 61. 6100. Okay, so what you can do is you can compound after it crosses 5800. 5800. 96600439999. Let it cross 50 EMA and then once it gives one more confirmatory candle, at that time you can enter. See, IT index is fantastic, so nothing to worry. If it gives a big volume, like it gave a big volume over here, you know, this could have been your averaging space, 5400, 5300. Right now also small averaging you can do if tomorrow is again another green candle, no, and it crosses this line, then you closing above this line, you can take one entry above 50 EMA. That should be good. You see, this is the resistance. Okay. Let it cross 50 EMA, that is better. Okay. Thank you. Okay. Sir, Nifty का क्या prediction? Have the bulls taken over now? Pardon? निफ्टी का क्या prediction है सर? निफ्टी का प्रेडिक्शन सर मैं रोज दे रहा हूं, आप देख रहे हैं ग्रुप में? हाँ सर, आज का नहीं दिया है, बाकी रोज दे रहा हूं, बट 17,300 और 17,600 will be little bit of resistance. 17,650 अगर क्रॉस कर दिया तो 18,000 18,200 की तरफ जा सकता है। 17,300 और 17,600 नेक्स्ट बड़े रेजिस्टेंस है।
एग्जैक्ट नंबर मैं दूंगा रात को या आज रात को दूंगा, अभी दे देता हूँ चलो। So Vishal bhai, it's a promising time to do some new entry. इट लुक्स लाइक, बट ये जैसे मैंने बोला था सेंटा क्लॉज रैली है, थोड़ा एफआईआई का एक्टिविटी कम होने की वजह से रैली है। एफआईआई आके फिर से कुछ गड़बड़ न कर दें, वो दैट विल बी अ लिटिल क्रिटिकल थिंग। तो 17,600 क्रॉस करने दीजिए, 18,200 के आजू बाजू थोड़ा सावधान रहिएगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म इंडिया निफ्टी इज गोइंग 2400, तो लॉन्ग टर्म का तो कोई इश्यू ही नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप थोड़ा ये वॉलेटाइल टाइम हो सकता है। ये देखो, ये जो है ना 50 EMA 17,347 पे निफ्टी, कौन पूछ रहा था? भूपेश भाई। या ये जो ग्रीन लाइन है ये 50 EMA दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने बोला था 17,347 है, फिर उसके ऊपर 17,427 है, और फिर उसके बाद 17,683। ये 3 मेजर रेजिस्टेंस हैं। अभी नीचे की साइड पे 17,233 विल बी सपोर्ट। ये आज जो गैप अप हुआ है, फिर से गैप भरने के चांसेस है क्या सर? गैप तो बढ़ता ही है, कभी ना कभी गैप तो बढ़ता ही है। गैप कोई भी खाली कभी छूटता ही नहीं है। ये देखो, इधर का गैप था अगस्त का, अभी जाके बढ़ा। ये इधर गैप डाउन हुआ था तो भी ये गैप बढ़ा, तो गैप तो बढ़ता ही है सर, आप जानते हैं टेक्निकल। बट ऐसा मेजर गैप नहीं था सर, ये जो गैप डाउन हुआ था इधर, उसका गैप अप भी हो सकता है। तो इधर भी काफी गैप डाउन थे ना, वो गैप डाउन भरने के लिए भी ये गैप नीचे आया, और वो तो हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते, बट यस गैप है तो भरने की कोशिश करता ही है गैप, जैसे कि आप जानते हैं। Vishal bhai, 16,409 is the last support, right? नहीं 16,409 के नीचे भी है, मैं चार्ट थोड़ा वो किया है। 15,491 एक सपोर्ट है। 16,409 इसलिए बोला क्योंकि इधर ये जो अपना ये कैंडल था ना, अपना कौन से डेट का, 20 दिसंबर का, उसका बॉटम था, तो उधर से काफी बड़ी वीक बनाई थी इधर, तो ये मेजर सपोर्ट है 16,409। लेकिन अब तो उसके नीचे ये भी आ गया अपना 200 EMA, तो 16,333 भी एक अच्छा सपोर्ट हो गया, 16,330। हाँ, 200 EMA भी अगर तोड़ देता है तो उसके नीचे एक फाइनल सपोर्ट है 15,491। उतना तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो टूटता है तो फिर उसके नीचे भी एक सपोर्ट है। आप देखो, मतलब मैं जितना दिखाना चाहिए उतना ही दिखा रहा हूं आपको। चार्ट तो काफी काफी बना ही होता है हमारा, बट जितना अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके सामने है। वो पूरा देख लेंगे तो कोई डर जाएंगे, या तो फिर कोई है ना, और मैं ऊपर की साइड का दिखाऊंगा तो कोई लोग बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए जितना दिखाने की जरूरत है उतना ही दिखा रहा हूँ। सही बात। ओके गाइस, अभी थोड़ा मुझे घर भी पहुंचना होगा, मैं ऑफिस में हूँ, लॉकडाउन भी है अभी इधर थोड़ा वापस 11 बजे से, तो वील क्लोज द मीटिंग हियर। इट वाज फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू गाइस। और अभी फिर से थोड़ा आप जानते हैं एक पर्सनल ये हो गया था, तो अभी वी आर कमिंग आउट ऑफ इट, तो हम और रेगुलर वेबिनार करते रहेंगे अब like before. So thank you for your presence, or we'll try to meet up very soon with some other webinar, some other topic. I hope what we discussed today was useful to you. और अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो आप आपके फीडबैक कमेंट्स जिस भी ग्रुप में आप हैं, you can give your comments in that group. Okay, thank you guys. Thank you. Bye.